Okay, so this particular session is around understanding of the margin, initial margin and maintenance margin for futures contracts, right? That's what eliminates counterparty or rather minimizes counterparty default risk. So in this particular case, अगर आपने ठीक से देखा तो there are two December gold futures contracts. The current price is $1,250 per ounce. Contract size is 100 ounces. So 100 ounces per contract into two contracts makes it 200 ounces of gold. $6,000 per contract का initial margin है. इसका मतलब you will start with a margin balance of 6,000 into 2, which is $12,000. $6,000 एक कॉन्ट्रैक्ट का, तो दो कॉन्ट्रैक्ट का $12,000 ऑफ margin account balance. Now, what is your gain or loss in the first case? If you are a buyer and the price falls, are you gaining or losing? Losing. And what is the gain or loss? Which will be 1241 minus 1. It will be a loss. 1241 minus 1250 into 200 ounces. $1,800 का लॉस हुआ आपका. So what will happen to your margin account balance? It will come down to $10,200. बराबर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ये आपका लॉस है. Next day it again falls by $2.70 per ounce. So what will be your gain or loss? 1238.3 minus 1241 into 200 ounces. So $540 का और नुकसान हो गया आपको. So your cumulative losses increase to $2,340. और आपका मार्जिन अकाउंट बैलेंस क्या हो गया अब? इट कम्स डाउन टू $9,660. हमें हर स्टेप पे देखना है कि मार्जिन थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं होनी चाहिए. $4,500 पर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब $2 का $9,000 मिनिमम रहना चाहिए. इफ इट फॉल्स बिलो $9,000 वी विल हैव टू डू अ मार्जिन कॉल. नेक्स्ट डे क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, तो नाउ देयर इज अ गेन. सो हाउ मच इज द गेन? हाउ मच इज द गेन? $6.30 इंटू 200 ounce, $1,260 का गेन है. So now your cumulative losses will come down. And now your margin balance will go up to $10,920. Is it right? क्योंकि $6.30 से इंक्रीज हुआ है. $6.30 into 200 is $1,260. Next day फिर गिर गया. It fell by how much? It fell by $3.30 per ounce into 200 ounces, just $660 का नुकसान हो गया. So your cumulative loss will again increase and your margin balance will come down to $10,260. Right? Next day, again it fell. So again you will have a loss of $240. $1.20 per ounce into 200 ounces. So your cumulative losses will now increase to 1980. Margin will fall to 10,020. अभी भी $9,000 के ऊपर है, so we are safe. $9,000 से नीचे जब जाएगा, then we will be worried. So now if you look here, it fell down further. It fell down by how much? Another $3.90 per ounce. $3.90 per ounce into 200 ounces is $780. उतना नुकसान हो गया. So your cumulative losses will now increase to 2,760 and your margin account balance will come down to 9,240. अभी भी we are safe. Next day what happens? ये फिर से ड्रॉप करता है. How much?
1260। क्यों? क्योंकि $6.3 per ounce into 200 ounces. So now your cumulative losses are going to increase. And what happens to your margin account balance? Your margin account balance will now drop below $9,000. तो हमको क्या करना पड़ेगा? We will again have to do a margin call. How much will be the margin call? $12,000 minus 7980, मतलब उसको एडिशनल $4,020 का डिपॉजिट करना पड़ेगा. 4,020. And what will be your revised margin balance? It will now become again $12,000 हो जाएगा वापस, रिवाइज बैलेंस आफ्टर द मार्जिन कॉल. बराबर कि नहीं? क्योंकि आप वापस मार्जिन भरोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा वापस. Now next day, what happens on the next day? The price increases. So what will happen? Will there be a gain or a loss? Gain of $180. So cumulative losses will come down. And now margin account balance will become 12,000 plus 180. बराबर ना? Now next, it falls again. So it falls by $5.40 per ounce into 200 ounces, which is 1,080 का drop है. So your cumulative losses are again going to increase, right? And your margin balance will again drop to $11,100. What happens next day? Again increases now. So there is a gain, right? So your cumulative losses comes down and your margin balance goes up. Correct? Next day, baapre, big fall. It's a fall of $17.10 per ounce into 200 ounces, which is $3,420 का नुकसान है आपको. So your cumulative losses increase to $7,800, and your margin will come down to again problem. Again we have dropped to 8,220. So what will happen now? You will have to do another margin call. So margin call अब कितना हो गया? Margin call will be $12,000 minus 8,220, which is $3,780. Again your balance goes up to $12,000. बराबर? हर बार आप मार्जिन कॉल करोगे वो बढ़ता जाएगा. Now next day what happens? No change. So no change matlab no change, no problem. So your balance, no gain, no loss. So no change in your cumulative and no change in your margin balance. है कि नहीं? Remains the same. Next day what happens? Increases. So good news. So now you will have a gain of 660. Cumulative losses will come down and margin balance will go up. नेक्स्ट डे फिर बढ़ गया तो आपका क्यूमुलेटिव लॉस कम हो गया, मार्जिन बैलेंस और बढ़ गया, राइट? नेक्स्ट डे और बढ़ गया, so now again gain. So your cumulative balance of losses goes down, margin balance goes up. Next day another increase, right? So your balance, cumulative losses comes down and balance goes up to $15,180. तो यहाँ पे जो आपको क्यूमुलेटिव लॉस है वो कितना दिख रहा है? $4,620 का क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है आपको. बहुत सिंपल है,
How much money was paid total by you or by the buyer? कितना पैसा उसने भरा है टोटल में? शुरू में कितना भरा? $12,000. उसके बाद फर्स्ट मार्जिन कॉल पे 4020, सेकेंड मार्जिन कॉल पे 3780. तो उसने टोटल कितना भरा? $19,800 भरा. और टुडेज वैल्यूएशन ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज हाउ मच? अगर आज वो सेटल करता है उसको कितना प्राइस मिलेगा? 15,180. तो कितना का नुकसान हुआ? लॉस इज 15,180 माइनस 19,800 विच इज नथिंग बट 4,620. ये वही 4,620 है जो आपको यहां दिख रहा है. दिस इज दैट सेम 4,620. The 4,620 that you are seeing there, that same 4,620 you are seeing here also. है ना? 4,620 का लॉस. बेसिकली नेट लॉस क्या होता है? आपने जितना भरा वर्सेस आपको कितना मिला. आपने भरा 19,800, आज के डेट पे अगर सेटल करते हो तो मिलेगा 15,180. तो नेट आपका 4,680 का, सॉरी, $4,620 का नुकसान हो गया, which is appearing here. So if this number and this number is the same, that means your margin statement is correct. So this is how marking to market mechanism and along in conjunction with your margin account movements helps to minimize counterparty default risk. अगर ये नहीं होता, suppose this was not there, और आप बायर हो, आपने लूज किया है $4,620. अगर ये मार्जिन अकाउंट नहीं होता तो आप भाग सकते थे ना बिना दिए, फिर केस चलता रहेगा तारीख पे तारीख. बट अब क्योंकि यू हैव, देयर इज अ मार्किंग टू मार्केट प्रोसीजर एंड अ मार्जिन अकाउंट डिपॉजिटेड, कैन यू रन. भाग भी जाओगे तो क्या होगा? आपका पैसा पड़ा है क्लियरिंग के पास $15,000, तो आप भाग सकते ही नहीं. और आपका जो भी लॉसेस है वो आपके मार्जिन से ऑलरेडी डेबिट हो चुका है. So you can't run anywhere. So who's protected in this case? The counterparty, which is the seller, is protected in this case. So even if you run, कुछ नहीं होने वाला, भागोगे ही नहीं. So this is how marking to market mechanism in conjunction with deposit of margins and also margin calls can help the counterparty to minimize the counterparty default risk. Okay, good. So that's it. Thank you.